Dear all, welcome to my channel. Today we are going to explore the topic of differentiation. The definition of differentiation is the derivative of a function f of x with respect to the variable x is the function f prime whose value at x is f prime of x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x over h. For better understanding of the differentiation, let's see this graph of any function y is equal to f of x. On this graph, we are choosing 2 points P and Q. The coordinates of P are x, f of x, where f of x is the y coordinate of P, which is obtained by putting x in the function f, and the coordinates of Q are z, f of z, where f of z is obtained by putting z in the function f. The coordinates of Q can also be represented as x plus h, f of x plus h, where h is equal to z minus x, where z is the x coordinate of Q and x is the x coordinate of P. The secant slope of this function y is equal to f of x is given by the formula f of z minus f of x over z minus x. In other words, final y coordinate of the function f of x minus initial y coordinate of this function f of x divided by final x coordinate of the function f of x minus initial x coordinate of this function f of x. When we apply the limit on the secant line, then it becomes the derivative of the function f of x, which is given by the formula f prime of x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by x plus h minus x, which is simplified as limit z approaches to x f of z minus f of x over z minus x. Let's see some rules of the differentiation. Rule 1 is derivative of a constant function. If f of x is equal to c, then d over dx f of x is equal to d over dx c, and it becomes 0. Derivative of any constant is equal to 0. For example, if we are picking f of x is equal to 3, then the derivative of this function f of x is equal to 0. If we are picking f of x is equal to 7, then the derivative of this function f is equal to 0. Rule 2 is power rule for positive integers. If n is a positive integer, then d over dx x power n is equal to n x n minus 1. And interpretation of the rule 2 is if you are picking different functions, for example x, x square, x cube, x4, x5, then the derivatives of these functions are given in this column. For example, अगर हमने function x choose किया तो इस case में d over dx x power 1 would be equal to 1. एक्सपोनेंट यहाँ पे आया, फंक्शन लिखा, 1 में से 1 लेस किया, it would be equal to 1 into x power 0, and the power of x which is 0, it becomes again 1, and the resultant is 1. Similarly, in the case x square, the derivative of f with respect to x would be equal to एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखा, फंक्शन पावर में से 1 लेस किया, it would be equal to 2x. Similarly, the derivative of x cube is 3x square, the derivative of x4 is 4x cube, and the derivative of x5 is 5x4. Similarly, for other functions, for example x6 अगर आपके पास है तो उसका जो derivative है वो 6x5 आ जाएगा, और बाकी भी इसी तरह से. Rule 3 is constant multiple rule. If f is differentiable function of x and c is a constant, then d over dx c into f of x would be equal to c into df over dx. For example, if the function is x square and the constant is 3, then the derivative of 3x square would be equal to 3 into d over dx x square. कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके बाहर हमने लिख लिया और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो गया. 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे फिर हमने पावर रूल अप्लाई किया. अकॉर्डिंग टू पावर रूल एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखा, x यहाँ पे पावर में से 1 लेस किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 वुड बी इक्वल टू 6, x पावर 1, एंड द आंसर इज 6x. Fourth rule is derivative sum rule. If f of x and g of x are differentiable functions of x, then their sum f of x plus g of x is differentiable at every point where f of x and g of x are both differentiable. At such points, d over dx f of x plus g of x would be equal to df over dx plus dg over dx.
जिस तरह से ये सम रूल है इसी तरह से डिफरेंस रूल में भी इसी तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स पे, तो डेरिवेटिव दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और डिफरेंस साइन जो है वो एज इट इज़ आएगा डी जी ओवर डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फंक्शन चूज करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4/3x² प्लस 5x+1, डेरिवेटिव अप्लाई किया बोथ साइड्स पे, और यहाँ पे जब डेरिवेटिव हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो बाय यूजिंग सम रूल ये सब पे सेपरेटली अप्लाई हो गया। एक्स क्यूब पर जब डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर रूल की रिस्पेक्ट से 3 पावर यहाँ पे आई, x पावर में से 1 लेस किया, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई किया 4/3, यहाँ पे x² पे फिर हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया, 5 यहाँ पे x पे फिर हमने पावर रूल अप्लाई किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड द आंसर ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस। थैंक यू।